साइट थी, यहाँ पे वॉशरूम यूज़ किया है। वॉशरूम में मेन्यू जो लगा हुआ है वो भी आपको शेयर किया है, और $50 का जो है वॉशरूम है। टनल में एंटर हो गए हैं और मज़ेदार सीन है। थैंक्स। सिस्टम भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, किसी किस्म की सफोकेशन फील नहीं हो रही। ट्रेन वेट कर रही है वहाँ से क्लियर हो, जो ट्रैफिक उधर से आ रही है। अब ये ट्रेन जिस तरह मैं आया हूँ, ये मेरे लिए और मेरे पीछे आने वाली गाड़ी को वेट कर रही है। आप कहेंगे ये बिल्डिंग क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है? इस बिल्डिंग के अंदर पूरा शहर है। Seafarers we met when we lived in Juneau were from Pakistan. We knew all the Pakistani sailors on the Princess ships, and our kids grew up playing hide and seek in the passageways where the Pakistani sailors were, and we were always invited to go and meet with them at dinner and have dinner. So we know about dal and sabzi, दाल chapati. क्रूज खड़ा है जो यहाँ पे स्टॉप होता है, और पीछे बोट्स हैं। तो मेनली यहाँ पे जो लोग आते हैं वो यही है, जहाँ पे आके ये क्रूज खड़ा होता है। Yeah, usually -40's up Fairbanks. Okay, it's good. Thank you very much, sir. Thank You're you. welcome. Thank you. Bye bye sir. ये यहाँ का मॉल है, एनकरेज 5th एवेन्यू मॉल। ये मॉल में देखते हैं क्या है। Nice. See? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक खूबसूरत दिन है, एनकरेज पे हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। हमारी गाड़ी का सस्पेंशन जो है, क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब था, रफ सड़कें थी, तो वो उसमें प्रॉब्लम आ गई है। इधर उधर भागे, निशान वालों के पास गए, कई तो एक महीने की अपॉइंटमेंट कह रहे थे। निशान वालों का तरला मारा, उनके कहा मेहरबानी होगी आपकी, वो मान गए, कहते हैं पूरी दिन छोड़ो गाड़ी को। कैन यू बिलीव दैट कि बाकी वर्कशॉप वाले मुझे कह रहे थे 1 महीने की अपॉइंटमेंट है, कोई कह रहा था तीन हफ्ते की अपॉइंटमेंट है। एनीवे, अल्लाह ने मेहरबानी की, उनसे रिक्वेस्ट की, वो मान गए। गाड़ी उनको दी, उसने मेरे से $195 लिए सिर्फ उसको चेक करने के। फिर अब उसने मेरे हाथ में $800 का बिल दे दिया। एक्चुअली ना 700 का दिया है बिल। उसने कहा कि जी $700 लगेंगे, आपकी जो नीचे सस्पेंशन है उसकी शाफ्ट जो होती है वो ख़राब हो गई है। तो वो मैंने कहा कि ठीक है जी करो, क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ मैं कनाडा से कराऊँ, नॉर्मल जेट से कराऊँ, तो सिर्फ $200 लगेंगे। तो $US को जब कनेडी में करें $800 को, दैट कम्स टू तकरीबन कोई $1100 के करीब बनते हैं। तो हम ये यहाँ पे $900 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं यहाँ पे काम करवाने का। तो ये सीन है, दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। तो अब देखते हैं, हम इधर आए हैं, कोई नाश्ता वगैरह करते हैं, देखते हैं अब ये गाड़ी कब फिक्स होती है। जब वो कॉल करते हैं तो फिर जाके गाड़ी पिक करते हैं। वंस इन अ ब्लू मूज, यहाँ पे सब मूजों की कहानी यही है सारी। नाश्ता करके निकले हैं, और किटी हमें अब वॉक करा रहा है कॉफ़ी के लिए, है किटी? एनकरेज की सड़कों में फिरते हैं, गाड़ी वर्कशॉप में रेस्ट कर रही है। हमने भी क्या जरा ना दौड़ाइए, थोड़ा वॉक कराइए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आफ्टरनून में गाड़ी जो है वो हमें मिल जाएगी। लेट्स सी। ये भी अल्लाह का शुक्र है यार, रास्ते में नहीं ख़राब हुई, नहीं तो काफ़ी तकलीफ़ हो जाती। और निकलने से पहले सेट करा के निकले। ये काफ़ी काम सिटी है। यहाँ के पूरे अलास्का की पॉपुलेशन जो है वो बता रहा था, वो ऊपर वाला टैक्सी लिया था, वो बता रहा था 7 लाख है, और कह रहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होती,
ये सबसे बड़ी खूबी है, और लोग कम है। उससे पूछा कि क्या स्पेशल है अलास्का के लिए, कहते हैं अलास्का का सबसे बेहतर है यहाँ आबादी कम है। तो ये सीन है। बस देख रहे हैं, ये देखो यार अलास्का के चस्के, हर वक्त पीछे पहाड़ियाँ। चलता जा भाई, चलता जा। वो देखो पहाड़ी नीचे से चढ़ के आए हैं, चल चल के खिंची आधा हो गया। वॉक करो, वॉक 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 वॉक। जी फाइनली हमारी गाड़ी हो गई है फिट। हमने विटियर का एड्रेस डाल दिया और विटियर जा रहे हैं हम। सीन सामने जबरदस्त है। निशान वालों ने हमारी ठीक है गाड़ी सेट कर दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वही कैसे से बात कर रहा था मोहम्मद से कि मैं क्या यार अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, रास्ते में प्रॉब्लम कोई नहीं हुई। बड़े सही शहर पे, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक सही शहर में, जो बड़ा शहर है जहाँ पे निशान की बड़ी डीलरशिप भी थी, वहाँ पे जाके ये प्रॉब्लम आया है और हमने सारा जो है वो अपना काम करा लिया है। उन्होंने दोबारा इसका सारा टोटल गाड़ी का इंस्पेक्शन की है, टायर से लेके इंजन के हर चीज़, ऑयल, शॉक्स, हर सब कुछ चेक करके। जो शॉफ्ट था उसका वो टूट गया था, तो हमने चेंज करा लिया। अब हम जो इंसान की हाथ में चीज़ है उसके मुताबिक हमने अपनी गाड़ी को फिट करा लिया। अब अल्लाह से दुआ है कि आगे जाके हमारा जो सफ़र है वो ठीक गुजरे और ये सारी चीज़ें जो हैं स्मूथली हो जाए हमारी। तो यहाँ से जो विटियर का एड्रेस है वो हमें बता रहा है तकरीबन कोई 1.25 घंटा यहाँ से लग जाएगा, 1 घंटा 13 मिनट के करीब। तो यहाँ से और फिर ऐड 30 मिनट्स कर लें तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। समंदर है, अलास्का बे का हिस्सा नहीं रहा देते जो इनलेट सेकंड में से। अच्छा चलो ठीक है भाई, जो को मान लेंगे। ठीक हो गया जी, बस देखते रहे जी। ये वे का हिस्सा है और सामने ग्लेशियर, दरमियान में थोड़े थोड़े स्पॉट नज़र आ रहे हैं। इससे पीछे जो हैं वो और भी बड़े ग्लेशियर होंगे। तो ये सीन है और अलास्का जिंदाबाद मैं कहूँगा। यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव, मैं कहूँगा मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस शहर में आके, एनकरेज में और अलास्का स्टेट में आके। समझे, ये एक अलग दुनिया है। ये बहुत महंगा है, टका के महंगा है, मतलब कि ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि यहाँ की डबल प्राइसेस हैं, राइट, किसी हद तक। या खाना पीना काफ़ी महंगा है। वो छोटा सा आप मैं कहूँगा कि आप 20 से $25 पर पर्सन एक नॉर्मल सस्ते वाला मील जो है वो आपको इतने का मिलता है। लेकिन शहर ज़बरदस्त है, लोग बहुत अच्छे हैं। हमारा जितना भी इंटरेक्शन हुआ है लोगों से, फिर वेरी नाइस, बहुत अच्छे लोग हैं। और यहाँ के रहने वाले लोग भी कहते हैं कि यहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं है, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं क्या परफेक्ट। कहते हैं हमारी औरतें यहाँ पे लोकल कपड़ों में नहीं, अपनी शलवार कमीज़ों में, अपने चादरें लेके जिस तरह पाकिस्तान में फिरती हैं उस तरह फिरती हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कोई कॉफ़ी शॉफ़ी मेन्यू लगाया हुआ है बाथरूम प्लस आइसक्रीम बाथरूम विद कैंडी बार bathroom plus latte bathroom only लेकिन पहले इधर व्यू चेक करते हैं जरा सीन चेक करो यार तो ये जी हम रुके हैं समिट लेक के ऊपर साइट थी यहाँ पे वॉशरूम यूज़ किया है वॉशरूम में मेन्यू जो लगा हुआ है वो भी आपको शेयर किया है और $50 का जो है वॉशरूम है और बाकी लाटे और आइसक्रीम जो है बाथरूम प्लस जो है $5-6 की पड़ा था आप लोगों ने ओके सो ये समिट लेक है ये हम चले थे वहाँ से एंकरेज से हम चले थे विटियर की तरफ लेकिन हम लॉस्ट हो गए हैं और अब हम ये एक्चुअली समिट लेक पे हैं आगे जो है सी वर्ड और हमर है Beer और मूस यार क्या बड़ा चीज है कितना बड़ा होता है करो एक करबो कितना बड़ा होता है ये एंकरेज है इधर से हम इधर आए हैं इधर हैं ये मूस पास में है इस वक्त ये स्पॉट हमारा जहाँ पे बुकिंग यहाँ से सीवर्ड है एक्चुअली हमसे मिस्टेक हो गई थोड़ा सा आगे लेकिन आने का भी मज़ा है वापस मोड़ रहे हैं अब दोबारा हमने वो जो है ना टोल रोड उसको वाइड किया हुआ था समहाउ तो उसने हमें वो आगे किसी अंदर से ट्रैक से लेके जा रहा था तो बहरहाल वो सेटल हमने किया है हम थोड़ा सा आगे थे अब हमने दोबारा गाड़ी को वापस लिया और अब हम दोबारा जा रहे हैं अब हमें पोर्टेज ग्लेशियर रोड पे जाना है तो वहाँ से हम टर्न लेके जो है वो जा रहे हैं सीन यार इतना को खूबसूरत है इतने खूबसूरत है कि मज़ा आ गया है ये काफ़ी बिजी रोड है जिस जगह जा रहे हैं वो बिजी है रिमेंबर आज वर्किंग डे है छुट्टियां नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये सारे जो आए हुए थे मोस्टली नहीं मैं तो जितने को भी देख रहा हूँ सारे के सारे मुझे तो वो टूरिस्ट ही लग रहे थे शायद कोई लोकल फैमिली हो लेकिन मोस्टली जो टूरिस्ट थे जो अमेरिकन कैनेडियंस या चाहे से भी दुनिया की सभी लोग विचियर आगे है पोर्टेज में एंटर हो गए हैं विचियर की रोड के ऊपर है बड़ी जल्दी विचियर आने वाला है और आप देखना खूबसूरती जो यहाँ पे है अपने इंतहा पे ये वो वाली नहीं है वो आगे वो तो 2.5 किलोमीटर की है के माइल की है वो पहले बंदा खड़ा है वहाँ पे कहे थे है कोई नहीं को चेक करिए आप देख रिवर जो भी है चेक करें जी सीन क्या खूबसूरत है यार ये देखो ख्वाब इसके देख क्या है ना अंदर मजा आएगा ये देखिए जी सीन चेक करें यार कमाल है हेलो मैडम Hi, $13. Is this your first time? Yes, madam. You're going to Whittier? Yes. Okay. So to get to Whittier, you have to drive through a single lane tunnel, share at the railroad. You're going to go to lane 3, just go at the green, do not stop, do not pull over, just go straight through. Okay. This is our Whittier brochure. Okay. You say lane number 3? Yeah, just And- go at the green light, you'll see it. What's the last time to come back? 11. 11. Thank you, madam. Bye-bye.
और मजेदार सीन है। थैंक्स। यहाँ से ट्रेन गुजरती है, उस पर हम गुजर रहे हैं। ये है बीटीआर की मजेदार चीज जो मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था। $13.5 दिए हमने। Almost, yes. Slow down. और वो कह रही है आखिरी कभी आप इधर आए तो आखिरी जो है टाइम आप जो क्रॉस कर सकते हैं टनल को अंदर से, वो 11 o'clock है। यार ये अच्छा एक्सपीरियंस है यार जाने का यहाँ से। Yeah, tunnel का Yeah. यूनिक टनल है। या इस तरह की टनल नहीं भी देखी। इसीलिए सर देखिए देखिए अक्सर जो टनल है ना वो अंदर से बड़ी रिफाइन होती हैं। वैंकूवर में जितनी भी टनल है वो बिल्कुल ही पत्थर वाले हैं। कभी Niagara के टनल है। जी, तो Niagara के टनल है। Yeah, it's like this. लेकिन ये कितना बड़ा है और वो क्या है। Yeah, I'm just saying. और Like, दूसरा बहुत मतलब विंडो का है ना वॉक टूरिस्ट एरिया Yeah, ट्रैफिक वाला है। इन्होंने एयर सिस्टम भी काफी अच्छा बनाया हुआ है, किसी किस्म की सफोकेशन फील नहीं होनी। समझ से ट्रेन आज ये बस ही मेरे ख्याल में गड्डियां पूरी हो गई हैं क्योंकि हम नहीं, हमारे पीछे भी है। इसका मतलब हम अकेले नहीं जाएंगे, साथ कुछ जाएगा हमारे। अल्लाह खैर करे। बड़ा तो लंबा टनल है यार। वैसे इधर रात को अंधेरा हो सर्दियों में, that is scary, I tell you। लेकिन यार ये तूने एक अच्छा पॉइंट दिया है, तुझे पता है ये टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। हाँ मैंने देखा बड़ी स्प्रेड है। अमूमन माइनिंग टनल स्प्रेड नहीं होती, पता नहीं किस मकसद के लिए बनी। तो उसने मेरे पे उसको पहाड़ को ही काटा है। ओए क्या रेड आया है? स्लो डाउन। अच्छा स्पीड। ये अंदर मैंने एग्जॉस्ट Keep left. जी? keep up to 19. Yeah. सही ना खबे मोड़ लेना। There you go. ये जी हम निकल आए हैं बाहर। Beautiful peoples. कुछ है तानु सामने जैसे ऐसी मास्टर फेरी कोई नहीं है। ये आ गया जी बोर्ड सामने पिटियर का। ब्यूटीफुल पिटियर। पुलिस की तीन नारी इलाका आ गए ने दबाव से बर्बादी। मजेदार है भाई बाबू, ये तो मजेदार सीन हो गया ना। ये आपने देख लिया सीन, इतनी लंबी टनल से गुजरने का। इस टनल के लिए मैं यहाँ आया था। एक ये टनल मैंने आपसे कहा था विजियर में आपको दिखाना है, एक बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है। और अब अगला एक चीज आपको और दिखानी है। ये सामने क्रूज है। पहले हमारा जो वेल्डिस था, नहीं वो क्रूज नहीं है। नहीं वेल्डिस से आ रहे थे तो वो क्रूज से आ रहे थे ना, वाल्दीस वाल्दिस से फेरी है। फेरी, सॉरी माय अपॉलॉजी। तो वेल्दिस से जो आ रहे थे वहां से जो फेरी थी वो हमने लेनी थी। अब ये ट्रेन ने अंदर जाना है, ठीक है ना। अब ये ट्रेन वेट कर रही है वहां से क्लियर हो, जो ट्रैफिक उधर से आ रही है। अब ये ट्रेन जिस तरह मैं आया हूँ, ये मेरे लिए और मेरे पीछे आने वाली गाड़ी को वेट कर रही है। ये ट्रेन अंदर जाएगी उधर से, फिर उसके बाद अब ये जो लाइनों में गाड़ियां लगी हैं, फिर ये गाड़ियां जाएंगी एंड फिर ये इसी तरह प्रोसेस चलता है। ये जो है प्रिंसेस क्रूज, ओ ये तो क्रूज है, ये आया है वहां से, वो जो कैरेबियन जाता है। और कैरेबियन से हाँ, वैंकूवर से yeah, बहामा से वो yeah, कह रहा हूँ ये जो क्रूज सियाटल से है, आपने एग्जैक्टली। कुछ ये है विटियर, ये इसका क्लासिक पार्ट मोरेना। ये अलास्का का फिर ठंड होनी है थोड़ी जी। नहीं, हाँ 15 टेम्परेचर की चल रहा है थोड़ी बहुत, लेकिन इट्स ओके।
और अब मुझे आपको एक मज़ेदार चीज़ बतानी है, जो कि मैं चीज़ जिसके लिए कह सकते हैं कि जिसके लिए मैं आया हूँ, वन ऑफ द रीज़न एंड टॉप रीज़न। दुनिया में शहर आपने देखे जहाँ पे लोग होते हैं, छोटे बड़े शहर होते हैं, उनमें घर होते हैं, 10 घर होते हैं, 15 घर होते हैं, 20 घर होते हैं, 50 घर होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ये एक बड़ी ही डिफरेंट चीज़ है दुनिया की। शायद आपने कभी ये चीज़ को पहले एक्सपीरियंस ना किया हो। वो चीज़ है क्या? ये आपने सब कुछ देख लिया इर्द गिर्द, जो आपके कमर्शियल और ये चीज़ें थी, सब कुछ था। अब जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये है, ये तमीद मैं इसलिए बांध रहा हूँ और लंबा कर रहा हूँ कि ये आपके सामने बिल्डिंग आ गई। मैं आपको बताता हूँ ये बिल्डिंग का क्या चीज़ है। जो आपसे कह रहा था कि आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी है, वो चीज़ है ये बिल्डिंग। आप कहेंगे ये बिल्डिंग क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है? इस बिल्डिंग के अंदर पूरा शहर है, यहाँ पे लोगों के घर हैं, इस बिल्डिंग के अंदर सिटी का ऑफिस है, इस बिल्डिंग के अंदर हॉस्पिटल है, इस बिल्डिंग के अंदर स्कूल्स हैं, इस बिल्डिंग के अंदर डे केयर्स हैं। पूरा शहर इस बिल्डिंग के अंदर रहता है। ये यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ की लिमिटेशन है। बाकी ये सारा टूरिस्ट बिजनेस, ये सब लोग जो करते हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। ये मैंने दुनिया में पहले कहीं नहीं देखा। अब इस बिल्डिंग के अंदर जाके आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि ये किस तरह अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। हम अब बिल्डिंग में एंटर हुए हैं। ये चीज़ फ्लोर है, ये इसका सेंटर है और यहाँ पे बच्चों की साइकिलें और ये चीज़ें रखी हुई हैं। ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस, यूएस पोस्ट ऑफिस यहाँ पे है। ये इनकी हाई स्ट्रीट है, ठीक है। ये वहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर है, ये ओपन है बिल्डिंग के अंदर। फिर कोई अपनी ग्रोसरी वगैरह करनी है। Well, we are surprised to see this building. You whole community live in this building. Yes, not the other. Some of them are living the other building, not far from here. Okay, Yeah, but mostly city. yeah. Everything is mostly here. are living here. Schools are here, School up there. and police station inside. Police station move it to the city building. Okay, Yeah, and And, everything. And yeah. The post office right there. yeah, Yeah. how many people live in this building? Couple hundred? Yeah, Right now, probably 200. 200. Families, Right now- there's probably 50 families. Yeah, right now because it's summer, Mhm. it's like 4, right? Yeah, 400, huh? yeah, probably around 400. During Yeah. the winter time, it goes to maybe 150. Yeah, maybe 100 winter. So for how long you living here? Me is going to 13 years now. And you sir? 5 years. So what brings you here? My dreams. Oh, sweet. Yeah. That's it. Where you came from? Iowa. I was raised in Iowa. Born in Denver. So why your dream was this city? I just kind of, the fishing's what got me here. Was Alaska was the whole thing, but I just ended up here, and I like Whittier. Because I heard the whole city is in this building. Now, there's 200 condos down at the manor Yeah. where she lives. Oh. So not everybody This lives is here. the one. Okay. Yeah. There are 2 buildings. Mm-hmm. Yeah, well, 3. Joe Shin down there, the Anchor Inn. Yes, they have Some people living live there. down there. Yes, Okay. yeah. So it means the people who are giving us information that whole whole city live in one building is a wrong information? Yeah. Basically, yes. Yes. Because there's the manor,
and There this are building and the lots of- anchor, but Yeah. Oh, they're same one building, under same management. No. It's different. Okay. So Yeah. then why you said yes? It's not all the people living here. No. Some living here and some living there, and the other they are living Choshen, huh? Joshin Yeah. down at the Anchor Inn, Anchor where the Inn. museum is down here. There's some Yeah. Some of the rest- housing in there, so Because on the internet, all information is the whole city is living in this. yeah, that's bull crap. It's not true. Maybe this was in the past and they didn't update, but I'm talking about the recent video. They built the manor before they built this place. Okay. This is a barracks for the military, and then the Buckland building was all was a big barracks with a shooting range and a swimming pool and auditorium. But it's all decrepit now. But they built the manor first before they built this and the other building. Because for me, even it's a better unique because I'm giving the right and true information. Yeah. But it's all on the internet. You just gotta watch what you're saying. Yeah, absolutely. Half of the people lives here. No, she said actually partly they are right. Mostly city is here. Yeah, mostly the residential people living here, they buy condos here, and the other part, they buy condos over there at the manor. Like myself, I bought 4 units over there. I buy 3 units over here. My kids living here, and I live there. But yeah, that's It's a good investment here. yeah. Okay. Yeah, one building here and the other one over there because you know this city belongs to the military before, and I think I heard, I'm not sure, but I heard that the community bought this one from the so that's why when I came over here, that's all the story I heard. But the history is right over there. You can read it, the history of this community. So they are all posting on the first floor on the hallway when you walk there. Okay. Thank you so much. वो कह रही इधर हॉलवे में हिस्ट्री लगी हुई है. हाँ वो आगे कर्नल साहब के नाम से जो है डेडिकेटेड बिल्डिंग आगे. तो ये सारी यहाँ पे हिस्ट्री लगी हुई है इसकी. जब ये बिल्डिंग बन रही थी, ये कंस्ट्रक्शन के दरमियान थी 1941 में. ठीक है. ये किस तरीके से ये बिल्डिंग्स सारी कम्युनिटी ये यूएस इंजीनियरिंग ये जिस तरीके से आए यहाँ पे ट्रेन और ये सारी देयर इज अ लॉट हियर. Whole city live in one building. This is not true. That's not. See, No. if you see that video tells that whole video is whole city live in this building. So here, when I spoke to people, they say there another building, actually 3 buildings or 4 buildings. Well, 200. We say that 200 people live here and 100 live there. Okay. So we 2/3 of the people live here. And they, and they say, well, City Hall is here. Yeah. It used to be here. Yeah. But now they built this big blue building, Just yeah, the recently. one down there, that gray Couple one years down ago. there. Uh-huh. and City Hall moved down there with the police department. We used to have the police department here. Now it's down there. Yeah. And the We used to have a health clinic here. yeah. Now it's down there. So. It's the impression of the video given to people that whole city live in one building. As I said, and that attracts me. Yes. And the interesting thing is when you think about this town, this is essentially where the majority of the people live. Yeah. This is the school. The kids go underground in the tunnel to go to the school and different things. This has been known forever as the town in one building. Information was not right. So there are 3 buildings. Not exactly correct. Okay. But we if you look around, there are no private homes here. Nobody lives on the side of the street with a driveway and a garage, like Right. the rest of the United States. We don't have that because the railroad owns most of the land, and it's leased. This is owned by Baggage Towers Condominium Association. This land, but a lot of the other land belongs to the railroad. And so you will not see any private homes here because there's no land here to buy. Perfect. So So that's why the people, and this is an old army base. Did you go inside and look at the pictures on Yes, the wall I there? did. Okay, see, there used to be a lot of buildings back in there that were wooden buildings and trailers where people lived. All of that has been torn down
And so there have been quite a few videos. Like if you look, we can't believe that so many people are interested in this place, right? But there's been a lot of videos that talk about the town that lives in one building. We didn't choose the title. But now I will definitely make clear, yes, there is the main building, as you said. Right. As you said, partly right. This is the main building. Other buildings are only residential buildings. And there's a school, now there's a city office. And the police station also moved there. Yeah, see, the police station used to be on the first floor. The little store used to be at the other end. There was a donut shop in here that Bakery. ran all winter. Bakery Yeah, was. the bakery. So the Right. essentially at that time, and even 20 years ago, there were. See, right now you have all these blue buildings down here where the cannery workers work. Yeah. That's only been there for maybe 3 years. That wasn't there. All the cannery workers used to live in here. Oh, there also, okay. Yeah, they all also lived here. The only other thing is down there the wooden. What's it called? The manor. Yeah, the manor, which is a totally wooden complex. But I don't think too many people live there. Maybe 50 or so. Oh, that I is don't wooden really know. complex. That is not a building like this. No, it's wooden. Oh, But that's an old. That's been here from the army days. Yes. Also. Yeah. Okay. Any buildings that are here of any structure, like that one there, that used to be the gymnasium for the army. Okay. Joshin store was one of the army buildings. The Anchor Inn. Yeah, the Anchor Inn. All of those were old army buildings. Police were here. The health department was here. Oh, yeah. The mayor office was here. The office of this building was here. Right. All the teachers lived in that building. This, and the official title is the City of Whittier. Okay. This is And a that's city? not true either. So, This is a city? Is this what you would call a city? so it means that manor is basically wooden. That's not a proper building. So you, Well, you it's tell- just a bunch of condominiums. bunch of okay. So Yeah. that's not a building. Then building is the main building is this. Yeah. So that makes sense. And that's what the he said. boiler right there. Yeah. The The- hot water is there, and that provides our heat. Okay. And our hot water for showers comes out of this Okay, orange. you tell the actual truth to the people, because the actual fact is, This is what I People should found know when the I came truth. from Toronto. yes, smart. I drove all the way from Toronto to this place? Oh my God, gotta be kidding. The winter, how's your communication? How you commute to Anchorage's nearest city where you need a grocery or big stuff you want to buy? Yes. So how's your commute in the winter? How is the winter looks Well, like? we have snow plows, and they keep Okay. the trees. They keep the streets clear. Although we get an awful lot of snow, they keep the streets clear. And unless we had one time this winter, there was so much snow we couldn't get between here and the tunnel. So until snow plows came and pushed the snow to the side of the road. I'm sure you have snow in Toronto. Oh, a lot. Yeah. A lot. You're familiar with snow plows. Yeah. People And- from India, like if they're from Mumbai, they have no concept of snow. When the ship came here in the first part of the year, there was snow over by the school up, 10 feet in front of the school, 15 feet down there by the basketball court. There was a lot of snow here. And for those people from India, they say, oh, we're not used to this so much snow. I'm from Pakistan. Actually, my background is. Pakistan. Yes. Oh, well, you have Kashmir, We have lots of. Well, some of the first seafarers we met when we lived in Juneau were from Pakistan. We knew all the Pakistani sailors on the Princess ships, and our kids grew up playing hide and seek in the passageways where the Pakistani sailors were, and we were always invited to go and meet with them at dinner and have dinner. So we know about Dal and Sabzi. Dal Chapati. Pakistan. Have you ever visited Pakistan? Every time we went on the ship, we were in Pakistan. We didn't need to go to the country. Well, we know you speak Urdu. Yeah. She's a smart lady. She knew my question. Yeah. So that's good. So Urdu is our official language. Yes. I would say go to Pakistan, just go and explore our northern areas. Mm-hmm. You will see the real beauty on planet. Mm-hmm. And secondly, try our food. Don't mix with Indian food. Yes. They I have used to go although to the mess and the It's very spicy. yes, our food is yeah. partly spicy and non-spicy as well. The bandara used to teach me how to cook. Oh, really?
Yeah. Taught me how to make chapati. And I had spices for a long time. He made a big jar for me, and then I used them all up. Then I was someplace else, and they gave me a jar of spices, but it was never the same. Never the same. So it wasn't the same. if you are from Pakistan, you're probably Muslim. Alhamdulillah. Yeah. Thank you for coming. Thank Thank you for coming. Any This is a message very you wanna interesting give? Place. about this your very beautiful city or town. This is city? You know, the native people never lived here. Okay. It's never been an Indian village, a Native American village. Okay. They were smarter than that. This was an army base. It started as an army base, but Yeah. you know, but And so a lot that's of places are Indian villages and grew out of an Indian village, but never Whittier or Anchorage either, for that matter. Anchorage started as a railroad stop. So Yeah, from Seward to Fairbanks. One good message about this beautiful city, you call it city, town, village, whatever. One good message and one something you're lacking here. I'm sorry, one good message and what? Was something you don't have here. Something I don't have here. The thing I don't have here is a lot of well, traffic. you know, there's a saying that nothing can be prettier than a sunny day in Whittier. And that's true. You look over there, you can see a glacier on the other side of that tank. Yep. And Yeah. up there on top of there, if you had a drone and flew it up over the top, you could see an ice field. The glacier used to come over the ridge there, but it was there when I moved here, but it's gone now. And there used to be a glacier up over on the top of that mountain. It's gone too. Did you take a look at the airstrip out there? Not yet. We will. I used to fly my own airplane into that strip. It's 1,400 foot gravel strip. It's just like every other runway, Bush. except it's in Whittier. One way in and one way out. You know, because the plane has to come like from Anchorage over that high mountain there. It's about 800 feet. Okay, so when you come through, you're going to come on the right-hand side of the bay, make a big left turn, line up with the runway and come in, because you cannot come over that 800-foot high mountain and land quickly. That's what I So was it's thinking. one way in and one way out. He's a very experienced pilot, or he wouldn't be coming in here. So there you go. Thank you very much, Thank you gentlemen. very I hope It's a you pleasure again. Thank enjoy you so your much. time here. Thank Are you. you going to Thank eat you. at the Wildcats? They have Yes, that's actually we are planning. The Yes, Wildcat, oh, you won't be sorry. yeah, they have a good fish sandwich too. If you Okay. We will. Thank you Okay. so much. Bye-bye. खड़ा है जो यहाँ पे स्टॉप होता है और पीछे बोट्स हैं तो मेनली यहाँ पे जो लोग आते हैं वो यही है जहाँ पे आके ये क्रूज़ खड़ा होता है और लोग यहाँ पे उतरते हैं और इस एरिया को फिरते हैं और यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ये सारा टूरिस्ट का एरिया है टोटल पॉपुलेशन तो इसकी 200 300 400 होगी कुछ लोगों से बात हुई तो आज एक और चीज़ भी क्लियर हो गई यहाँ पे एक बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे सारे लोग रह रहे हैं मेन बिल्डिंग हाँ एक है लेकिन साथ और भी बिल्डिंग हैं तो ये था व्हिटियर यहाँ पे एक खूबसूरत सीन है यहाँ पे हम काफ़ी इंजॉय किया है खूबसूरत माहौल है यहाँ पे खाना खाते हैं और खाना खा के फिर निकलते हैं यहाँ से और अगली डेस्टिनेशन में जाते हैं